Hello and welcome to all the viewers of 3.0 TV. This is Manoj Dara. And I'm Ruchi Sharma. Cryptocurrencies fell in Asian evening trade on Friday in the aftermath of Fed Reserve's rate move amid concerns over economic outlook and ability of the blockchain networks to attract more projects into its fold in the current situation. Bitcoin slipped below $19,000. US futures extended a drop on Friday, pointing to lower opening of stocks for the fourth straight day, as investors fled to safe haven assets such as bonds and dollars. The US stocks are set to end down for the fifth week in 6 out of 6 weeks. The Fed on Wednesday raised rates by another 75 basis points and signaled that there are more hikes to come going forward. The Fed chairman Jerome Powell, while speaking to reporters, indicated more pain for the economy as the central bank sought to tame inflation. Dollar index, which measures the strength of the greenback against its basket of currencies, advanced further, weighing on cryptocurrencies. Bitcoin was recently seen trading at around $18,890, down 1.7% in the past 24 hours. Ethereum, the second biggest crypto, was trading around $1,300, down by 0.8%. All major altcoins mostly traded lower. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज क्रैकन की मार्केट इंटरमीडिएट के रूप में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर करने और टोकन को हटाने की योजना नहीं है। यूएस स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने सिक्योरिटीज के रूप में लेबल किया है, जो आने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेव रिपली ने कंपनी के कल्चर कोर्स पर अपने रहने का वादा किया है। क्रैकन ने पहले यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रशियन यूजर के डिजिटल वॉलेट एड्रेसेस को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट का पालन करने से इनकार कर दिया था। क्रैकन ने बुधवार को घोषणा की है कि इसके ऑफन कंट्रोवर्शियल को-फाउंडर जेसी पावल पद छोड़ देंगे और क्रैकन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रिपली सीईओ की भूमिका संभालेंगे, जब तक फर्म एक नए सीओओ को हायर करेगी। Preferred equity holder in the failed cryptocurrency lender Celsius Network have filed a motion in the bankruptcy court to appoint a panel representing Series A, Series B shareholders and to place them at the front of queue when it comes to the sale of custodian from GK8 and the Celsius mining operations. The shareholders are worried that the bankruptcy process is overly focused on retail customers and they would be left out. DeFi टेक्नोलॉजीज की एक सब्सिडरी वैलर फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में अपने न्यू कार्बन न्यूट्रल बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट की शुरुआत करेगी। ईटीपी की ट्रेडिंग 23 सितंबर से शुरू हुई। कंपनी अपने ईटीपी को 1.49% के मैनेजमेंट फी के साथ बिटकॉइन के सस्टेनेबल और क्लाइमेट फ्रेंडली एक्सपोजर के रूप में देखती है। ईटीपी की संरचना के लिए वैलर ने पैच के साथ भागीदारी की है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्लाइमेट एक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है और पहले एंडरसन हॉरोविट्ज और नोटेबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ काम कर चुका है। Hedin, a Metaverse infrastructure development firm, had raised $30 million in Series A funding in a round led by Molten Ventures and including Epic Games, the developer of the online video game Fortnite. A London-based Hedin plans to use the funds to build its Metaverse virtual infrastructure technology and get the extra computational power required to expand the scope of Metaverse initiatives. Other participants include 2050 Capital, Alumni Ventures, Aster Capital, Entrepreneur First and NQT. वेबसाइट पर कई हफ्तों के प्रतिबंध के बाद क्रिप्टो मिक्सर टोर्नेडो कैश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म GitHub पर वापस आ गया है। इथेरियम डेवलपर प्रेस्टन वैन लून ने गुरुवार को ट्वीट पर रिपोर्ट कर दी थी कि GitHub ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोर्नेडो कैश ऑर्गेनाइजर और कंट्रीब्यूटर्स को पार्टली अनबैन कर दिया है। ऐसे में डेवलपर ने सुझाव दिया कि टोर्नेडो कैश के कोड रिपोजिटरीज अब रीड ओनली मोड में है, जिसका मतलब है कि GitHub ने अभी तक फुल फंक्शनैलिटी को बहाल नहीं किया है। And Russia has finally given a green signal to use of crypto assets in cross-border payments. On Thursday, September 22nd, the Bank of Russia and the Ministry of Finance jointly reached an agreement for the cross-border use of crypto assets. The current rule will also allow Russian residents to send payments across the border using digital assets. The proposed policy is intended, in particular, to allow Russian citizens to access digital wallets. The Deputy Finance Minister of Russia has also noted that they will ensure the proper regulations are put in place to prevent the illicit use of cryptocurrency. All right, that's all there is in today's news special bulletin. And now let's move on to our special segment, Weekly Wrap.
and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I'm Manoj Dara. And Ruchi, let's get started with the top story for the day. Yes, sure. On Monday, Bitcoin prices slumped to a 3-month low in overnight trading, and US dollar index moved higher within a touching distance of its recent 20-year high to change hands at 110.095 against a basket of 6 global peer currencies. Tuesday and Wednesday markets traded lower ahead of the much-awaited US Fed meeting outcome. Separately, MicroStrategy accumulated 301 BTC that added to the optimism. Thursday, after a 75 basis point rate hike by the Federal Reserve, the dollar index, which has been on a tear in recent weeks, notched a fresh high of 111.445 on Thursday. In a separate development, crypto whale have shown a major transition in the last 7 days, which shows accumulation as well at lower levels, and buying was witnessed in BTC and ETH. On Friday, Bitcoin fell by 0.8% over the past 24 hours, and it is trading at $18,930. Ethereum has plunged by 0.2% and is trading at $1,290. तो यहाँ मनोज तीसरी बार 75 बेसिस पॉइंट रेट जो है हाइक हुआ है एंड इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में आने का नाम नहीं ले रही. इनफैक्ट यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि ग्लोबल आप स्टॉक मार्केट्स देखें, डॉलर इंडेक्स इज ओवर 111 के करीब कुछ ट्रेड कर रहा है. और यहाँ पर एक बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन जैसे ही अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में भी देखने मिला है. बट एक लोअर लेवल पर एक वैल्यू बाइंग ने सपोर्ट किया मार्केट को, एंड हेंस वी हैव सीन लोअर लेवल पर वैल्यू बाइंग का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट हैज करेक्टेड, क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स हैव करेक्टेड फ्रॉम $3 ट्रिलियन और $1 ट्रिलियन के नीचे उसका टोटल मार्केट कैप वो ट्रेड कर रहा है. वी हैव ऑलवेज been telling to our investors or viewers, हम हमेशा बताते हैं कि there is a big correlation between the stock market, US stock market and the cryptocurrency market. तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पर अगर 35% अगर कुछ करेक्शन स्टॉक मार्केट्स में आती है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रफली अराउंड 60% आई है, बिकॉज वो हायर वॉलिटिलिटी इसमें है बिकॉज वो अनरेगुलेटेड है. लेकिन जैसे जैसे रेगुलेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पर एक ब्रॉडर एक इंटरेस्ट भी आ रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, और वेल में बाइंग एक्यूमुलेशन वैल्यू बाइंग होती है नीचे में, एक सपोर्ट मिलता है, एंड हेंस वी हैव सीन दिस ऑप्टिमिज्म. All right, moving on, the Indian government is working to bring cryptocurrencies under the GST net soon. The finance minister is working on a proposal to define the characteristics of cryptocurrencies, their usage, and how they fit in the existing legal framework, helping the GST rate set body to fit the asset class under either 18% or 28% category, reports have suggested. As if the 30% tax and a 1% GST was not enough, now Indian government wants to apply 18% to 28% GST. If applied, GST will definitely kill the dying cryptocurrency market in India. That's what the reports have suggested and market participants have already been talking about. एक बहुत बड़ा कंसर्न है जी, और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते बिकॉज वॉट एवर they have decided, they have implemented. और अगर कुछ steps, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. हमने काफी एग्जैक्टली वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसके लिए वहां पर उनका एक स्टैंड है कि वो ऐसा ही करेंगे एंड दे विल फॉलो व्हाटएवर दे वांट टू डू इट. Moving on, the Cardano Wasil upgrade went live at 9:45 UTC or around 4:30 AM India time. Cardano's native coin ADA climbed in line with the broad market, though the upgrade launched today and the new capabilities for developers will be only available on September 27th, that is one epoch later. The upgrade is named after Wasil Saint Dabov, a Cardano community member who passed away in 2021. तो वसिल हार्ट फोक जो है आज से शुरू हो गई है, कहीं की लागू हो गई, और बहुत सी अच्छी बातें उसके बारे में हमने आज बहुत से इंडस्ट्री मेकर्स से बात भी की, एक्सपर्ट से बात की, और उन्होंने कहा कि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, स्केलेबिलिटी ज़्यादा होगी, कॉस्ट इफेक्टिव ये होगी, तो बहुत से फायदे हम आगे अभी देख रहे हैं फिलहाल. और ये पर सेकंड में इंप्रूवमेंट आएगा. जी. एंड इनफैक्ट डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे कैन डेवलप मेनी एप्लीकेशंस ऑन द प्लेटफॉर्म. एंड ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्डानो का वर्सेस इथेरियम में टोटल वैल्यू लॉक्ड जो डीफाई सेगमेंट को एक बहुत बड़ा शेयर है इथेरियम का, और कार्डानो कैसा उससे ओवरटेक करता है. NFT वॉल्यूम्स में तो वो तो अलग ही गेम है, विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट द गेम इज ऑल अबाउट टोटल वैल्यू लॉक्ड. एंड यहाँ पर एप्लीकेशंस कितनी होने वाली और प्रोजेक्ट्स कितने बनने वाले
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. जो भी एक्टिविटी प्लेटफॉर्म पे होगी उसका इम्पैक्ट उसके टोकन पे आएगा. दैट्स व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव इज. Moving on, Sam Bankman-Fried-led cryptocurrency exchange FTX is in talk with investor to raise up to $1 billion at a valuation roughly around $32 billion. Some of the funds from the new round of capital raised will be used to acquire distressed companies. That's what the company has already mentioned. FTX has signed a deal that it gives its option to buy lender BlockFi, and the company was in discussion to acquire South Korean Bithumb. So this is something which we have seen. Sam Bankman-Fried has always come forward and helped the cryptocurrency market. हमने देखा था एक बहुत बड़ा कंसर्न था टेरा लूना में. He stepped forward और उन्होंने कुछ प्लान्स और एक सेंस ऑफ एक हेल्पिंग हैंड भी दिखाया था. एंड आई थिंक सो दे आर लीडर्स इन द मार्केट. दे हैव कम आउट विद ब्रॉडर सॉल्यूशंस एंड वी होप दैट they can their suggestions or with this buy they can change this cryptocurrency environment. और ये भी कहा जा रहा है कि FTX और Binance दोनों ने $50 million की लीडिंग बिड्स दी हैं फॉर जो बैंकक्रप्ट कंपनी है Voyager Digital के लिए. सो दिस इज वेरी गुड कि वो हमेशा डिस्ट्रेस कंपनीज को हेल्प करने के लिए इस बेरिश मार्केट में या क्रिप्टो विंटर में हेल्प करने के लिए आगे आते हैं. और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जो कैपिटल उन्होंने रेज किया उससे वो जो है इन कंपनीज को हेल्प करेंगे. यूजुअली क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज अ सेल में 200 रुपीज की चीज आप 10 रुपए में खरीदते हो. बिल्कुल. So that doesn't mean that you are helping that supermarket or for that matter the retail store to survive. That is also. So that is something which we have to see. So moving on, market making firm Wintermute has sent a message over the Ethereum blockchain to the hacker that stole $160 million from the firm on Tuesday. Sent at midnight UTC on Thursday, the message told the hacker to return the funds by end of the day or else Wintermute would proceed to approach the authorities. It urged the hacker to accept $16 million white hat bounty. There has been no response from the hacker so far. तो यहाँ पर $160 million जो है का हैक हुआ. उन्होंने बाउंटी दी है कि आप $16 million जो है हैकर को कहा कि आप रख लीजिए एज अ वाइट हैट बाउंटी एंड $144 million जो है वो वापस कर दीजिए. नहीं तो और ये कहा कि एक डेडलाइन भी दी गई है, तब तक आप ये ऑफर जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं. इफ नॉट तो फिर देन दे विल टेक एक्शन, दे विल अप्रोच अथॉरिटीज एंड एवेन्यूज एंड. लेकिन फिलहाल हैकर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. और आएगा भी क्यों, $160 million दिए. बट जोक्स अपार्ट, दिस इज समथिंग व्हिच इज द सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न. हैकिंग और हैकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे. इनफैक्ट आप कितने लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के आप करोगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इनफैक्ट हमने वासिल अपग्रेड के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताया. वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फीचर है. दैट इज समथिंग विच दे हैव टू अंडरस्टैंड कि गोइंग फॉरवर्ड सिक्योरिटी लेयर्स फीचर्स कितने इंपॉर्टेंट है और कितना सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में दे रन देयर ऑपरेशंस. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. Moving on, UK government on September 22nd introduced a bill to make it simple for law enforcement agencies to seize, freeze and recover cryptocurrency assets when they are used for illegal activities such as money laundering, drug trafficking and cybercrime. The Home Office Department of Business, Energy, Industrial Strategy, Serious Fraud Office and Treasury introduced a 250-page economic crime and corporate transparency bill which extends beyond cryptocurrencies. तो ये दिस इज समथिंग which has been going on. क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशंस, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज पे रोक. और यहाँ पर फॉर एनी कॉज रुचि, यहाँ पर अगर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो देयर इज अ कंसर्न फॉर दैट कंट्री बिकॉज इधर द मनी मूव्स इन और मूव्स आउट. वो वहाँ पर देयर इज अ थ्रेट टू दैट कंट्री एंड दैट इज समथिंग विच नो वन वांट्स कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए. और यहाँ यूके बहुत बढ़ चढ़कर जो है इन रेगुलेशंस को लेकर आ रहा है. वो चाहे वो NFTs को प्रॉपर्टी का दर्जा देना हो या फिर CBDC लेकर आना हो या फिर अभी ये रेगुलेशंस लेकर आए हैं इन सब साइबर क्राइम के लिए. तो इट्स वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव मूव, राइट? इट्स ऑलवेज गुड. So moving on, according to a new report from the Treasury Department, the US wants to develop a future payment system that promotes American value, minimizes risk and fosters inclusion. To achieve its objective, the agency recommends more research on a possible US CBDC in case one is ever seen as beneficial to national interest. The Treasury Department says it will support the Federal Reserve by forming an inter-agency CBDC task force to support a more competitive and inclusive US payments landscape. The department recommends encouraging the use of instant payment systems. तो यहाँ पे
जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर पेमेंट सिस्टम की बात करें, यूएस को चाहिए ऐसा एक फ्यूचर पेमेंट सिस्टम, और उसके लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक जो है रिपोर्ट भी जारी की और बताया कि दे आर मोर लुकिंग टुवर्ड्स यूएस का सीबीडीसी एंड इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी इनको थोड़ा सा ये चैलेंजेस लग रहे हैं कि उसके लिए क्या है कि बिजनेसेस एंड कस्टमर्स को थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल जो हैबिट्स हैं वो चेंज करनी पड़ेगी, एंड इट इज नॉट इंस्टेंट पेमेंट्स जो है दैट इज मोर एक्सक्लूसिव एंड नॉट इंक्लूसिव जो वो चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। सो आई मीन इंडिया का भी एक ऐसा ही कुछ स्टैंड है। वहाँ पर होलसेल सीबीडीसी जो हमें पता है कि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का फेज 1 शुरू हो गया है। Right. और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, और रिटेल की तरफ वो अभी हाल फिलहाल एज ऑफ नाउ फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि बहुत सारा बड़ा बड़ा पेमेंट्स होता है जहाँ पर आपको स्विफ्ट वे में अगर आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में कैसा फैसिलिटेट होगा, बट वी हैव टू सी दैट हाउ इट इवॉल्व्स। सीबीडीसीज इज अ प्रोजेक्ट विच इंडिया इज लुकिंग टू, और उसका अनाउंसमेंट भी हो गया है, एंड वो देखना पड़ेगा कि अभी कैसा हाउ इट शेप्स एंड डेवलप। Moving on, last week was a big week for fundraising. Sports metaverse startup Loot Mongol has won a $200 million funding committed from Gem Global Yield to expand its operations. Two Sigma Ventures, the venture capital arm of New York-based quant hedge fund Two Sigma, raised $400 million for the crypto investments apart from enterprise software, financial technology, and consumer technology. Right. So, this is actually a very encouraging sign, Ruchi, कि यहाँ पर fundraising इतनी सारी हो रही है। because at a time when cryptocurrency market is in a broader concern, यहाँ पर fundraising activity हो रही है, valuations भी मिल रही है, although वो top के valuations नहीं मिल रही है उनको, because आपने अगर देखा कि अगर बिटकॉइन अगर 69,000 से अगर घटकर अगर 17,600 पे आ रहा है, तो एक सेंस ऑफ फेयर कंसर्न और हाँ हो ही जाता है। और इनफैक्ट ऐसे टाइम पर जो आपको एक्स वैल्यूएशन 4x मिलने वाली थी, वो आपको 1x मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है, तो एक पॉजिटिव साइन है वो। बिल्कुल। Moving on, for the first time ever, a virtual celebration of Saudi Arabia's National Day will take place on a Metaverse platform, a computer-generated museum showcasing Saudi heritage from various regions of the kingdom will be part of the online celebrations. For their virtual avatars, players can buy non-fungible token clothes that are based on regionally specific traditional Saudi clothing. A proof of attendance protocol, a digital badge that attests to attendance, is also available to everyone participating. From September 22nd to September 24th, it will take place on the Decentraland Metaverse platform, with September 23rd being National Day. The King Abdul Aziz Foundation for Research and Partnership and marketing firm The Bold Group collaborated to put on the event. तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इमर्सिव एक्सपीरियंस पे उन लोग फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे सऊदी अरेबिया का नेशनल डे मनाया जा रहा है, तो इंडिया में भी अभी जो इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त के दिन, फ्लैग होइस्टिंग की जो है सेरेमनीज हमने देखा था मेटावर्स पे हुई थी। सो इट्स अ नाइस वे जैसे मेटावर्स को यूज किया जा रहा है। सो दिस इज द फ्यूचर, रुचि, एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट Web3 में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। दुबई इज एक्चुअली वर्किंग रियली हार्ड एज फार एज द क्रिप्टो यूनिवर्स इज कंसर्न। बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर उन लोग काम भी कर रहे हैं। 5G तो रोल आउट हो ही गई है ऑलमोस्ट वहाँ पर, एंड ओनली टाइम विल टेल दैट कि यहाँ पर मेटावर्स और Web3 डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर गवर्नमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। All right, that's all there is in today's weekly wrap. This is Manoj Dara signing off. This is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great weekend. Thank you.